Honorable members of the bench, honorable members of the bar, honorable guests, my dear colleagues and my dear students, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं थैंकफुल हूँ मिस्टर अमीर एजम मलिक साहब का। उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस कराई और मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ कह सकूँ। साथ ही मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहे, ये कॉन्फ्रेंसेस, ये वर्कशॉप्स, ये सीखने का अमल है, इंशाल्लाह जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अब कुछ बात करते हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर, थोड़ा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर। सबसे पहले रिट से मुराद क्या है। रिट एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको आइन में भी कहीं डिफ़ाइन नहीं किया गया, लेकिन इसका मतलब हम सब जानते हैं। हम समझते हैं कि रिट इज़ अ फॉर्मल ऑर्डर ऑफ अ सुपीरियर कोर्ट to direct any authority which may be judicial, quasi-judicial, even administrative, or a person to do or to refrain from doing some act, certain act. जहाँ तक ताल्लुक़ है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, थोड़ी रोशनी इसके ऊपर डालते हैं। इन यूनाइटेड किंगडम the writs have been called as royal prerogatives, since only the king or crown as the fountain of justice could issue writs through the court of King's Bench or the court of Chancery. कोर्ट ऑफ चांसरी एक्चुअली चांसरी सेक्शन था जिसको लॉर्ड चांसलर हेड करता था, मगर इसको कोर्ट ऑफ चांसरी कहा जाने लगा और इसको बाद में कोर्ट ऑफ एक्विटी भी कहा गया। द किंग इशूड दीज रिट्स अगेंस्ट हिज ऑफिसर्स टू कंपेल देम टू एक्सरसाइज देयर फंक्शंस प्रॉपरली और टू प्रिवेंट देम फ्रॉम अब्यूजिंग देयर पावर्स। People being aggrieved by the actions of the king's officials came to the king for redress. The king issued the writs against his officials to give remedies to his subjects. Gradually, as the governmental functions increased and the concept of rule of law emerged and the courts became independent, these writs became the prerogatives of the courts. These writs were habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition and quo warranto. इसी दौर में जब ये लीगल सिस्टम डेवलप हो रहा था यूनाइटेड किंगडम का, थोड़ा मैं अर्ज़ कर दूं कि ये वो वक्त है जो सन 1066 के बाद नॉर्मन्स ने जब इंग्लैंड को कनकर किया और विलियम, जिसको विलियम द कनकर कहते हैं, उसने जब टेक ओवर किया, तो उस वक्त उसने पता चलाया कि इंग्लैंड के अंदर लीगल सिस्टम क्या है। तो पता चला इंग्लैंड के अंदर ट्राइब्स हैं और हर ट्राइब्स के अपने अपने कस्टम्स हैं और उन कस्टम्स की रोशनी में डिसीजन होते थे। उसके बाद मज़ीद जब तहकीक की गई और ये कोशिश की गई कि एक कोई सिस्टम फार्मूलेट किया जाए, तो ये पता चला कि कुछ कस्टम्स ऐसे हैं जो तमाम ट्राइब्स के अंदर कॉमन हैं और जिन्हें सब लोग फॉलो करते हैं, मे बी थोड़े फ़र्क के साथ। तो फिर उन तमाम कस्टम्स को जो कॉमन थे इकट्ठा करके उन्हें कॉमन लॉ का नाम दिया गया, जिसे हम कॉमन लॉ समझते हैं। और उसके बाद कॉमन लॉ कोर्ट्स डेवलप हुई और कॉमन लॉ कोर्ट्स लोगों को उन कस्टम्स की रोशनी में, जो कि इनफैक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ थे उस वक्त के, इंसाफ देना शुरू किया। मगर इसके बावजूद लोगों के कई मामलात अनसेटल रह जाते थे, क्योंकि वो कस्टम्स जहाँ मौजूद थे वहाँ रिलीफ मिलता था और जहाँ कस्टम नहीं था वहाँ कोई रिलीफ नहीं था। तो अल्टीमेटली लोग मायूस हुए, लोगों ने बादशाह के पास जाना शुरू किया और उसके बाद किंग ने लोगों को रिलीफ देना शुरू किया थ्रू कोर्ट ऑफ चांसरी। जो मैंने अर्ज़ किया कि एक चांसरी सेक्शन था, तो जब किंग के पास काम का बर्डन बढ़ा, जब शिकायतें ज़्यादा आने लगीं, तो उन्होंने रेफ़र किया कि लॉर्ड चांसलर इन चीज़ों को देखेगा। और फिर चूँकि लोगों को वहाँ से इंसाफ मिलने लगा अगेंस्ट द कॉमन लॉ कोर्ट्स, तो उसका नाम लोगों ने रख दिया कोर्ट ऑफ एक्विटी। ठीक है, कोर्ट ऑफ एक्विटी या एक्विटी से जो रिलीफ या रेमेडीज़ मिली वो आज भी हमारे लॉज में मौजूद हैं। अगर हम मिसाल लें तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर जितनी रेमेडीज़ हैं दे आर एक्विटेबल रेमेडीज़ और उसका ओरिजिन एक्विटी कोर्ट से जाके मिलता है। इसी तरह जब बाकी मामलात में किंग के ऑफिशियल से जहां लोगों को शिकायत होती थी तो वहां रिट्स इशू होती थी और इस तरह लोगों को इंसाफ मिल रहा था। अब यूके के अंदर जो रिट्स की पोजीशन थी, थोड़ा उसके ऊपर मैं अर्ज़ कर दूं कि इन यूनाइटेड किंगडम हिस्ट्री ऑफ मैंडामस बिगेन विद बैग्स केस इन 1615 77 English reports 1271. In this case, a person named Bag
was unjustly removed from his office by the head of the town, ya mayor. The court ordered him to restore Mr. Bag, otherwise show the court a good reason for his conduct. He failed to satisfy the court and therefore writ of mandamus was issued to restore Bag. जहाँ तक prohibition की बात है, initially the writ of prohibition was used to limit the jurisdiction of church by restraining it from acting without or in excess of its jurisdiction. Similarly, the writ of certiorari is so named because in its original form it required the king should be certified or more fully informed of the proceedings to be investigated. This writ enabled the Court of King's Bench to control the actions of inferior courts and to make it certain that they should not exceed their jurisdiction. So, certiorari was a judicial writ at initial stage, but gradually the jurisdiction was enlarged to include within its fold all authorities performing judicial, quasi-judicial, and even administrative functions. Earlier, writ of certiorari was used as a writ of error. It was invoked only in criminal matters, but later its scope was extended to civil matters. जहाँ तक quo warranto की बात है, originally this writ was writ of right for the king against the subject, any subject, who claimed or usurped any office, franchise, liberty or privilege belonging to the crown, to inquire by what authority he supported his claim in order to determine the right. And lastly, the writ of habeas corpus was issued to examine whether a person was illegally kept in custody. Now, writ jurisdiction in Indo-Pak. In British India, a Supreme Court was first established in 1774 under the Regulating Act of 1773. This court was empowered to issue prerogative writs. Later on, two other Supreme Courts were established in Madras in 1800 and Bombay in 1823, which were also given the power to issue writs. In 1862, these three Supreme Courts were abolished, and in their place, three high courts were established, which were empowered to issue writs. After the partition in 1947, Pakistan became an independent dominion. Under the Government of India Act of 1935, the Interim Constitution of Pakistan, Section 223A, as His Lordship has mentioned, gave the High Courts the power to issue a few writs, including habeas corpus. Habeas corpus was also being operated under Section 491 of the CRPC of 1898. Similarly, under the 1956 Constitution, both the Supreme Court and the High Courts were given the power to issue writs, and specific names of all writs were incorporated in the Article 22 of the Supreme Court and 170 of the High Court. Similarly, under the 1962 Constitution, for the first time, a change was introduced in writ matters. Only the High Courts were empowered under Article 98 to issue writs, but the particular names of the specific writs were eliminated from the text of the article. It is assumed that for the following two reasons, the names of various writs were omitted. Number one, in the United Kingdom, the Administration of Justice Act of 1933 and 1938 were passed, whereby mandamus, prohibition, certiorari, and quo warranto were abolished as writs. Of these writs, mandamus, prohibition, and certiorari have been turned into orders and quo warranto into injunction. There is only one independent writ, and it is habeas corpus. This might have influenced the constitution makers of 1962 to delete the specific names of various writs. Number second, some writs have limited scope in their application. For instance, prohibition and certiorari. These two writs were basically judicial writs and were applicable only in respect of judicial and quasi-judicial bodies. Thus, if the specific name of prohibition and certiorari would be used, then the courts would not be able to apply them to control administrative actions of which separate procedure would be provided for. To avoid this inconvenience, the specific names of the writs
have not been incorporated, rather provisions have been inserted so that the contents of those writs are retained and the control of administrative actions may as well be possible by the same device. इसके बाद 1972 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, आर्टिकल 201 के अंदर रिट जुरिस्डिक्शन मौजूद था. इसी तरह 1973 के अंदर आर्टिकल 199, 184 रिट जुरिस्डिक्शन अभी भी मौजूद है. थोड़ी बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिट्स के ऊपर जो इस वक्त एप्लीकेबल है हमारे पास. मैंडेमस, जिसका मतलब है वीक कमांड, is issued by a superior court to a subordinate court, tribunal, board or any person to perform a public duty imposed by law. When any of the said authority refuses to perform its legal duty, the duty may be judicial, quasi-judicial or purely administrative. The writ of mandamus may be invoked where there is wrong exercise of duty or abstinence from exercising duty. The mandamus, however, does not lie against a private individual. Prohibition means prohibition of proceedings, lies to prohibit an inferior court from continuing its proceedings in a particular case where it has no jurisdiction to try. It is not a writ of corrective nature, it is a writ of preventive nature. It prevents courts, tribunals, quasi-judicial bodies and other officers from exercising their power beyond their jurisdiction or exercising these powers which are not vested on them. Writ of certiorari means to be certified, to be more fully informed of. This writ orders a subordinate court, tribunal or quasi-judicial authority to deliver its record in a case so that the High Court may review it. It may quash the order already passed by a subordinate court, tribunal or quasi-judicial authority. Now the habeas corpus, which means let us have the body, is issued by a superior court to protect the human liberty. This writ has become a means of testing the legality of detention. It is described as the first security of civil liberty. The writ is issued to produce a person who has been detained, whether in prison or in private custody. The court may release him if such detention is found illegal. Writ of quo warranto means by what authority? It prevents the person from wrongfully or forcefully holding any public office or from continuing the office being ineligible. By writ of quo warranto, the court has authority to ask the holder of public office that by what authority he is holding it, and if the holder has no proper authority to possess the office, he should be ousted from holding the office. There are certain features of the writ jurisdiction. Number one, writ jurisdiction is an extraordinary remedy. ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडी है, ऑर्डिनरी नहीं है, इसलिए स्पीडी भी है और ये बड़ा जल्दी लोगों को रिलीफ मिलता है इसके ज़रिए. द सेकंड, writ jurisdiction operates within the territorial limits. No doubt it has limits within the province. Number third, the nature of writ jurisdiction is supervisory. It examines whether the challenged action is lawful or not. The fourth and very important feature, writ jurisdiction is protected by the basic structure doctrine. अगरचे इसके ऊपर इख्तलाफ किया जा सकता है, मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं, बट ये कहा जाता है the powers of the High Court under Article 199 can only be curtailed by the other provision of the Constitution and not otherwise. It means जैसे आसमा जिलानी वर्सेस पंजाब PLD 1972 SC 139 कि this special jurisdiction of the High Court cannot be taken away by an amendment to the Constitution. इसी तरह इन अब्दुस्तार खान नियाजी वर्सेस सेटलमेंट कमिश्नर PLD 1974 लाहौर 324, it was again held that the constitutional power of the High Court cannot be curtailed or restricted by a subordinate legislation. The principle laid down in Islamic Republic of Pakistan versus Muhammad Wali PLD 1976 Supreme Court 57 was that the jurisdiction of High Court under Article 199 may be called the conditional jurisdiction because it is dependent upon the other provisions of the Constitution. It was held in Pakistan versus Sayyid Ahmad Khan PLD 1974 SC 151 that where the jurisdiction of the court is ousted by the Constitution itself, it will be for the court to interpret the ousting provisions. And finally, writ jurisdiction cannot be barred by any statute. कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जिसके अंदर ये कहा जाए कि किसी मामले में किसी कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं होगा. इवन देन लिख दिया जाए तब भी इख्तियार होगा.
Now there are certain prerequisites of the writ jurisdiction. Number one, it is discretionary. ये कोर्ट की सवाबदीद पे है कि ये किसी केस में कोई रिट इशू करे या ना करे. Nobody can compel the court कि आपने लाजमी करना है. Similarly, it is subject to constitution. Constitution के अंदर जहाँ जहाँ वाज़े तौर पे कह दिया गया है कि वहाँ हाई कोर्ट इन्वोक नहीं हो सकती, इसकी जुरिस्डिक्शन इन्वोक नहीं हो सकती, वहाँ ये नहीं हो सकता. तो ये कहा जाएगा कि जैसे आर्टिकल 41 है, 46 है, 66 है, 69 है, 105 है, 203 है, 211 है, 212, 225, 233, 236, 239, 245, 248, ये वो आर्टिकल हैं जो एक्सप्रेसली हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है उसको बार करते हैं. इसके अलावा लेकिन इसके अंदर भी हाई कोर्ट को इख्तियार है कि वो इंटरप्रेट करे कि आया इस प्रोविज़न का क्या मतलब है. द नेक्स्ट वन इज़ लोकस स्टैंडाई और अ पर्सन बीइंग अग्रीव्ड. कुछ केसेस में ये लाजमी है कि जो इंजर्ड पर्सन है वही कोर्ट के अंदर आए और कोई शख्स नहीं आ सकता, बल्कि कुछ सूरतों में कोई भी शख्स आ सकता है. इसके ऊपर कुछ प्रिंसिपल सेट हुए हैं. मिसाल के तौर पे वेदर अ पार्टी इज़ एन एग्रीव्ड पार्टी, इट डिपेंड्स अपॉन द केस फैक्ट्स ऑफ ईच केस. निसार अहमद वर्सेस एडिशनल सेक्रेटरी फूड एंड एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 1979 का केस है. इसी तरह it is sufficient if the person alleging to be aggrieved has a personal interest in the performance of a legal duty which if not performed would result in the loss of some personal advantage. Irshad Ali versus Pakistan PLD 1975. Similarly, a relative may be an aggrieved person in certain cases. Province of East Pakistan versus Hira Lal 1970 and Nusrat Bhutto versus Chief of Army Staff 1977. An aggrieved person has been defined as a person who has a legal grievance against whom a decision or order has been pronounced which has wrongfully deprived him of something or which has wrongfully affected his title to something. ये held हुआ Salam Muhammad Abdul versus Chairman PLD 1965 Dhaka 231. A person is aggrieved if he had an interest which is lost due to the failure to observe the law by a public functionary or authority. Begum Nazir Abdul Hamid versus Pakistan 1974. A person is aggrieved if his legal right is denied by some authority which was duty bound to perform something related to such right. PLD 2000. The next one is prerequisite is there must not be an alternative remedy. अगर alternative remedy नहीं है तो jurisdiction invoke होगा. और क्या है? Alternative remedy means a remedy which is adequate, efficacious, expeditious, inexpensive, appropriate, convenient, beneficial and effective. और ये हल हुआ अब्दुल बाकी वर्सेस Superintendent of Jail Much PLD 1970. The last one is subject to the petitioner conduct of the petitioner. ये जो हाई कोर्ट का jurisdiction है it is available subject to the conduct of the petitioner. उसमें नंबर 1 है bona fide case. केस ऐसा हो जो कि अपेरेंटली बनता हो. अगर उसके अंदर कुछ छुपाया गया है, कोई कंसीलमेंट है, कोई मैनोवर किया गया है तो हाई कोर्ट रिफ्यूज़ कर सकती है. सिमिलरली ही हु सीक्स एक्विटी मस्ट डू एक्विटी. द पर्सन सीकिंग एक्विटी मस्ट डू एक्विटी. इट इज़ नॉट जस्ट द क्लीन हैंड्स but also clean mind, clean heart, clean objective that are equally fundamental of judicious litigation. Jurisdiction of court should not become a source of abuse of process by law of the disgruntled litigant. Waqar Haider Butt versus Judge Family Court 2009 SCMR 1243. He who comes to equity must come with clean hands. No litigant can play hide and seek with the courts or adopt pick and choose. True facts should be disclosed as the court know law but not facts. One who does not come with candid facts and clean breast cannot hold a writ of the court with soiled hands. ये held हुआ KD Sharma versus Steel Authority of India Limited 2008. There must not be unnecessary delay. If a party is not prompt and diligent in pursuing the constitutional remedy, the court can refuse to exercise constitutional jurisdiction. Fazlur Rahman Mahmood versus Additional Settlement Commissioner Land 1984 CLC 1100. ये थी कुछ गुजारिशात और आखिर में मैं एक छोटे से वाक़े से इख्तिताम करूँगा. वो ये है कि कुछ अर्सा पहले यूनिवर्सिटी में किसी स्टूडेंट ने अप्लाई किया दाखिले के लिए और एडमिशन उसका मेरिट पे बनता था, जो नहीं हुआ और अल्टीमेटली वो स्टूडेंट हाई कोर्ट में आए कि उनका दाखिला उनसे कम नंबर वालों का दाखिला हो गया और उनका नहीं हुआ. तो बजाय इसके कि एक डायरेक्शन होती, वो केस दोबारा चला गया यूनिवर्सिटी के पास और फिर सेमेस्टर गुजर गया, वो फैसला नहीं हुआ. तो जब इस तरह के केसेस होते हैं तो फिर वो स्पीडी रेमेडी होना मीनिंगलेस हो जाता है. तो बेहतर है कि इसके ऊपर भी हमें गौर करना चाहिए
कि बहुत सारे केसेस में जब हम वापस डिपार्टमेंट को मामला भेजते हैं, जहाँ पता होता है कि एक अबनॉर्मलिटी हुई है, तो एक डायरेक्ट हमें डायरेक्शन देनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।